Hi guys and welcome back to my channel. If you have clicked on this video, तुम्हें पहले से ही पता है that this is a Q&A video. And if I have missed your question by any chance, आप comment box में वो question को वापस repeat कर सकते हैं. तो या तो मैं answer कर दूँगी या फिर मैं अपने next Q&A video में definitely उसको note down करके answer करूँगी. So let's start. Oh, also मैंने इस वीडियो में टाइम स्टैम्प्स डाले हैं, तो अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर सुनना है तो आप डायरेक्टली वहाँ जा सकते हैं. ऑल थैंक्स टू मी. एंड मैंने ट्रेनिंग वाले क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में रखा है और अपने पर्सनल जर्नी, लाइफ एंड पर्सपेक्टिव वाले क्वेश्चंस को एंड में रखा है. सो यू कैन चूज. राइट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी बजिंग नाउअडेज इज हाउ टू ग्रो मसल एंड लूज फैट साइमल्टेनियसली. इस सेंटेंस का एक सिंपल वर्ड है जिसको हम बोलते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन, विच इज़ आपका बॉडी वेट सेम रहता है बट योर फैट डिक्रीजेस एंड जितना डिक्रीज फैट में है उतना ही मसल गेन में है, तो आपका बॉडी वेट बैलेंस रहता है. नाउ हाउ टू एक्चुअली अचीव दिस गोल इज गोना बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, विच मीन्स दैट मैं एक ब्लैंकेट आंसर नहीं दे सकती और बोल सकती हूँ कि यही अप्रोच है और यही अप्रोच हर इंसान के लिए चलेगी. ऐसा क्यों है? इस बिकॉज हर इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, तो अप्रोच भी थोड़ी डिफरेंट रहती है उस हिसाब से. उनकी ट्रेनिंग हिस्ट्री, उनका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसा है एंड हाउ डिसिप्लिन दे हैव बिन इन द हिस्ट्री एंड बेसिकली एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. एंड व्हेन यू टेक दिस इन्फॉर्मेशन तो उनके केस स्टडी के हिसाब से उनका अप्रोच इज गोना बी डिफरेंट फॉर बॉडी रिकॉम्पोजिशन. एंड देयर आर 3 सच केस स्टडीज जहाँ पर काफ़ी ईजिली हम रिजल्ट देख पाते हैं फॉर बॉडी रिकॉम्पोजिशन. सो द फर्स्ट वन इज द बिगनर पीपल. एंड बाय बिगनर आई डोंट मीन पीपल जिनने कभी ट्रेन नहीं किया है, बट आई ऑल्सो मीन पीपल जो ट्रेन करते आ रहे हैं बट शायद उनकी ट्रेनिंग कभी इतनी डिसिप्लिन नहीं हुई है, या फिर शायद उनकी ट्रेनिंग इज़ नॉट गुड एंड इट कैन बी बेटर विद देयर इम्प्रूवमेंट इन फॉर्म एंड बेसिकली पोटेंशियल पूरी तरह से उन्हें नहीं निकाले अपने ट्रेनिंग से. सो इवन दोज पीपल आई वुड कंसिडर देम एज beginner stage in this video. The second one is people who are overweight, and the third one is people who are starting out after a long break. Okay, now that you know all of this, I'm gonna try and give you an answer about कैसे recomp करना है. So it's pretty simple. There's no magical answer to it, honestly. It's just that you first try to get your maintenance calorie calculated. Okay, you start eating around your maintenance calorie. Now for some people it's going to be a little above maintenance or little bit below maintenance depending on कि उनका starting point क्या है. Macros में you're going to be eating relatively a higher protein diet. Now इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कार्ब्स बहुत कम कर दो और सिर्फ हाई प्रोटीन डाइट में जाओ, बिकॉज कार्ब्स आर extremely important for your performance. Okay, so do not ignore carbs and your fat is also important for your overall well-being and your body functions. But yes, जब तुम per kilogram body weight की बात करते हो, protein intake is gonna be a little on the higher end. With this obviously keep a track of your weight over the week so that तुम्हें पता चले कि तुम्हारा वेट किस तरफ टेंड हो रहा है, ऊपर की तरफ ट्रेंड हो रहा है या नीचे की तरफ हो रहा है, हाउ यू आर लुकिंग, योर इंच टेप मेजरमेंट्स, एंड कीप दैट डेटा विद यू बिकॉज दैट्स हाउ यू गोना नो इफ यू आर गोइंग ऑन दैट पार्ट ऑफ रिकॉम्पोजिशन. ऑब्वियसली जब ट्रेनिंग में बात आती है, हैव टू हैव अ वेरी वेल प्रोग्राम ट्रेनिंग जहाँ पर सारे छोटे एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स टिक ऑफ हो रहे हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, रिकवरी पोस्ट योर जिम, योर मील टाइमिंग एज वेल. So these small things, if you do it for a longer period of time, you're gonna see these changes in your body for sure. Now obviously individuals जो बहुत trained है, okay, who are well experienced in their training and whose training age is also higher, उनके लिए recomp मुश्किल नहीं होगा, but उनके लिए recomp का process is gonna be much more longer. But my personal opinion is people who are highly trained should have a period of just focusing on, you know, a muscle building phase जहाँ पर तुम अपने बॉडी को वो environment दे रहे हो, और environment का मतलब है तुम अपने बॉडी को उतनी calories दे रहे हो performance के लिए and repair the muscle and for it to grow. Basically environment दे रहे हो muscle building के लिए. That is my personal opinion, and in any point I'm not saying that recomp is not possible. It is definitely possible. But for you guys, because I'm guessing जो
वीडियो मेरी व्यू कर रहा है falls into the category of general population, definitely recomp is possible. There's no magical answer to it. Just start ticking the basic box of first being consistent, eating around the maintenance calorie, training hard, having a well layout structure जहाँ पर तुम धीरे धीरे देख सकते हो, अपना प्रोग्रेस भी नोट कर सकते हो, and resting, taking the recovery protocol. So do that for a long period of time and I'm pretty sure you're gonna see some changes. Okay, we are on to the next question, which is how many times should I train triceps in a week? You tell me. I'm kidding. Honestly ये क्वेश्चन थोड़ा वेग है, बट अगर मेरे को एक मिनिमम थ्रेशोल्ड देना है तो डेफिनेटली तुम्हारे 1 साल के पीरियड में जो एक ट्रेनिंग ब्लॉक होगा शायद 12 हफ्ते का या 16 हफ्ते का, उसमें तुम्हारा आर्म्स का प्रोग्रामिंग होना चाहिए फॉर श्योर. बिकॉज इफ यू आर ट्रेनिंग ऑल योर बॉडी पार्ट्स एंड यू जस्ट लाइक फॉरगेटिंग योर आर्म्स, then there will be some long term consequences of that from a functionality point of view. Now अब ये अलग बात होगी अगर तुम्हें ट्राइसेप्स एक्चुअली ग्रो करना है बहुत ज़्यादा, लाइक इफ यू वांट टू ग्रो योर ट्राइसेप्स, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी, ओके कॉन्ट्रास्ट नहीं आ रहा है, बट एनीवे अगर तुम्हें ट्राइसेप्स ग्रो करना है then obviously like any other muscle group you have to make sure that you're giving that muscle enough stimulus for it to grow and the environment for it to grow. By stimulus I mean taking care of the intensity, training close to failure. So normally daily basis में what I have seen is लोग हमेशा एक arms day रखते हैं अलग से, and honestly if you keep a day just for your arms which is bicep and tricep, I think for starters it is enough. But what I'm trying to say here is that it's up to you. If you want to grow the triceps, the equation is different. If you don't want to grow it, the answer is different, which I've given you. Okay, let's move on to the next question or I'll just start rambling. Okay, the next question is, other than walking, what activity can you suggest to increase the NEAT? Okay, अगर आपको NEAT नहीं पता है क्या है, NEAT is called as non-exercise activity thermogenesis, which is तुम्हारी जितनी भी calories burn हो रही है ये छोटी छोटी movements करने से, which is actually not like exercise, that's why non-exercise. So even when now I'm talking to you, मेरे हाथ चल रहे हैं खुद से क्योंकि मेरी आदत है, मेरा एनर्जी यूज हो रहा है बॉडी में. So usually NEAT is a part of a fat loss equation and also for just not to make your life sedentary कि तुम बस लैपटॉप के सामने बैठे हुए हो. So अगर तुम्हें अपना NEAT increase करना है और तुम और तरीके ढूंढ रहे हो, you can do exactly what I am doing right now. I'm literally standing in front of the camera and talking to you guys. So even me choosing to stand over sitting is me using up more energy than I would have अगर मैं बैठी रहती तो. So honestly इतना मत सोचो. I would say just make sure कि तुम्हारी overall life थोड़ी सी active है. जब तुम्हारे पास मौका होता है ग्रोसरी शॉपिंग करने का, जाओ वॉक करके वापस लेके आओ, बर्तन धो घर के अपने अपने पेट के साथ खेलो. If you can have a standing desk. So these are like all the small things that I can guess right now to answer your question. But just don't focus too much on how do I increase my NEAT. Just make sure that you are active holistically. You know, बाकी सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें खुद ही बैठ जाती है. Okay, next question: how to build upper body faster? Any muscle building process is going to take time. Okay, I cannot give you ऐसा कोई magical approach या answer जिससे तुम्हारी muscles जल्दी grow हो जाएगी. अब जैसे मैंने फर्स्ट में आंसर किया था कि हर केस स्टडी अलग होती है तो हर इंसान के लिए आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. इस चीज़ में भी तुम्हें पता होगा ये चीज़ काफ़ी कॉमन है कि जब कोई नया बंदा एक्सरसाइज शुरू करता है या जब कोई पर्सन जो पहले इतना कंसिस्टेंट नहीं था अचानक से बहुत जल्दी कंसिस्टेंट हो जाते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं बहुत टाइम तक, तो उनका मसल बिल्डिंग प्रोसेस is going to be a little bit faster. But as your training age increases, your muscle building process actually gets a bit slower. It's the war of patience, to be honest, and consistency and discipline. So I can't give you any answer for this जिससे upper body जल्दी grow हो जाए, but मैं ये बोल सकती हूँ कि same thing for any muscle group, like I said above, is you have to make sure that you are training close to the failure for your muscle to get enough stimulus for it to grow. Okay, make sure that your nutrition is
ऑन पॉइंट. बाय ऑन पॉइंट आई मीन जितना एनर्जेटिकली डिमांडिंग प्लान है उतना ही तुम्हारा न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल सेट है ताकि दोनों मैच करें. ओके, और ऑब्वियसली अ लिटिल बिट हायर अकॉर्डिंग टू योर गोल. इफ योर गोल इज मसल building, I would say eat a little, probably 5 to 10% up of your maintenance, and have enough volume in the week spread out so that you can also train intensely on both the days that तुमने spread out किया है. And that's it. Like, that's what you do for any muscle group. It's not just upper body. All right, next question is please record a short video on push-up. I actually have this video on Instagram already. IGTV में मैंने बनाया था, but I think I'll do like a different video on YouTube for like probably 3 minutes, and I'll explain the whole process again. So to answer your question, next YouTube video. Next question is push-pull legs or bro split. Am I missing on gains if I'm on bro split? That's a very good question. Interesting question. And for those of you जिनको पता नहीं है कि bro split क्या होता है, bro split is basically training each muscle per week. So I will have chest on one day, back on one day, arms on one day, shoulder on one day, legs on one day. So basically having a split of each body part laid out एक हफ्ते में. अगर हम एक बड़े पिक्चर को देखते हैं, ओके, इफ़ यू हैव लाइक अ हेलीकॉप्टर व्यू ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड योर ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी, देन आई वुड से दैट हैविंग अ परफेक्ट training split is not the first priority or not the top priority in the list. Okay, there are other things as well. So I would say इतना छोटी चीज़ों में मत ध्यान दो अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो. But I'm gonna try and give you some perspective on this question. Okay, let's say मैं bro split कर रही हूँ, Monday को मैं chest कर रही हूँ. I start with 5 exercises, 3 set each. Okay, that is like total of 15 reps in total. Now I decide to, after certain period of time, I decide to go from 5 to 6. Okay, because I can handle that much as I've adapted to my training. So I go to 6. Now I've adapted to 6. Now my focus for probably progressing at an optimal rate, and when I say optimal, उसका मतलब ये है कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो और उस ट्रेनिंग से रिकवर कर पा रहे हो. ठीक है, अगर ट्रेनिंग ज़्यादा है रिकवरी नहीं है, इट्स अ बैड इक्वेशन. अगर ट्रेनिंग हम इतनी कर रहे हैं जबकि हमारी रिकवरी लेवल इतना है और इतना हम लोग स्पेस छोड़ रहे हैं, दिस मीन्स दैट आई कुड गो अ लिटिल बिट मोर हायर and that would be probably more optimal because I know that I can recover, right? So let's say अभी मैंने आपको example दिया कि मैं 6 exercises कर रही हूँ of 3 sets each, okay, for my chest day. Now I can do 2 things to progress. Either I just start lifting heavier loads, okay, and progress, or I also include more exercise variation or exercise selection in my programming. Okay, now the problem is that bro split में after a period of time on your training day जो exercises तुम last में कर रहे होगे, that will be deprioritized. What I mean by that is that you will start from here, but by the time you reach to your 4th exercise where you're increasing your load and trying to do more sets, you're not in a position to perform your best, right? So one can probably say that you're missing out on gains. So a more, I would say, smart approach at that point would be to divide it up. So push pull legs. Chest की अगर मेरे पास वो 6 to 7 exercises मैं कर रही थी एक दिन में, I'm gonna divide it up on 4 and 3. Now I am performing each day very well because I'm not clubbing everything together, plus I'm progressing. Basically the frequency of that helps me to perform better and maybe make the most out of my exercises. जो मैंने अभी चीज़ें बोली है ये थोड़ी लूज फ्रेमवर्क में समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेशन के लिए तुम्हें सिर्फ एक्सरसाइज बढ़ानी होती है, बट व्हेन यू रीच अ सर्टेन लेवल देयर आर वेरी लिटिल थिंग्स दैट यू नीड टू ट्यून इन फॉर यू टू बी एबल टू मेक दैट प्रोग्रेस. Now saying this, I'm also going to say that for some people they just mentally like having a pure chest day, okay, and if you are one of those, just go and start doing that, because you know, I don't think I would say that oh bro split is bad and you know this is more scientific, because मैंने ऐसे बहुत posts देखे हैं, but I will say that there are times where हर चीज़ की अपनी एक place और एक
जगह होती है जहाँ पे तुम इंट्रोड्यूस करते हो इन सारे प्रोग्रामिंग को. You know it's always the question of what will give you the most bang for your buck, right? So yeah, that was my opinion on it. Let's shift to the next question. Hey.